Hello students, good morning. How are you all? So today first we see a remark which is two curves intersect at right angle if the tangents to the curve at the point of intersection are perpendicular to each other. इसका मतलब कि हमारे पास दो कर्व्स होंगे, बराबर? कैसे होंगे दो कर्व्स? एक कर्व ऐसा होगा, दूसरा कर्व ऐसा होगा. ओके, these two are कर्व्स. और ये जो है वो किसका टेंजेंट है? ये कर्व का, बराबर. और ये जो आपका जो टेंजेंट होगा वो किसका कर्व का होगा? तो ये कर्व का टेंजेंट होगा. मतलब हमारे पास दो कर्व्स है, दोनों कर्व्स के जो टेंजेंट्स है, बराबर ना? ओके, टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1 है, बराबर ना? एट पॉइंट x1, y1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर. मतलब ये जो टेंजेंट आपको दिख रहा है ना, ये कर्व का एक टेंजेंट है और ये दूसरे कर्व का ये टेंजेंट है. दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, बराबर. कर्व्स एट द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसा होगा तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों कर्व्स है ना, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. और उसकी कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास आंसर जो कंडीशन है वो क्या है? टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1. इसका मतलब कि जो पहला कर्व होगा, ओके, जो पहला कर्व होगा उसका हम m1 फाइंड आउट करेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. दूसरे कर्व का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. m1 और m2 हमारे पास अवेलेबल है. उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें. अगर हमें आंसर -1 मिलता है, ओके, अगर हमें आंसर -1 मिलता है तो हम फाइनली वी कंक्लूड दैट द गिवन टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. ओके, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. इसका मतलब कि दोनों कर्व के जो टेंजेंट है, ओके, उसका वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है. अंडरस्टैंड? सो ये हमारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है. Okay, now depending on remark, our question is exercise 6.3, 23rd sum. Prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1. Okay, तो हमारे पास एक कंडीशन दी है कि 8k square is equal to -1 होगा. तब हमें क्या प्रूव करना है? ये जो दोनों कर्व्स है ना वो क्या है? कट एट राइट एंगल्स. इसका मतलब हमें m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना है. तो लेट फाइंड इट. सो आंसर में ओके, तो हमें m1 और m2 फाइंड आउट करने. इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व, m1 और m2. इसका मतलब हमें क्या जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट. ओके, हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले हम वो पॉइंट को सपोज कर लेते हैं. लेट x1, y1 be any point on curve. Okay, here the given equations of curves are x is equals to y square and xy is equals to k. So give result number respectively 1 and 2. Okay, so now differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x we get. So that implies we get 1 is equals to 2y dy by dx, and here we apply our multiplication rule in differentiation. We get x dy by dx plus y is equals to 0. So that implies we get dy by dx is equals to 1 upon 2y, which is your first curves dy by dx, and second curves we get dy by dx is equals to -y by x. Okay, now we need to find our point. So अभी हम क्या पॉइंट फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? हियर और नाउ the point x1, y1 is on the curve, so it must satisfy both curves equation. So 1 implies x1 is equals to y1 square and 2 implies
x1 y1 is equals to k. So give it result number capital A and capital B respectively. अब हम क्या फाइंड आउट करें, हमारा पॉइंट्स फाइंड आउट करें, मतलब x1 कॉमा y1. सो नाउ आई यूज रिजल्ट नंबर कैपिटल B दैट इम्प्लाइज x1 y1 is equals to k. सो आपको दिख रहा होगा कि x1 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ दिख रहा है ये x1 इज इक्वल टू हम y1 स्क्वायर पुट कर सकते हैं. सो y1 स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू k. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम कैपिटल A. सो दैट इम्प्लाइज y1 क्यूब इज इक्वल्स टू k. So that implies y1 is equal to, finally we get k raised to 1 by 3. This is your first point. That means the value of y1. Put y1 is equals to k raised to 1 by 3 in equation number capital A. So capital A implies x1 is equals to k raised to 1 by 3 whole raised to 2. So that implies x1 is equals to k raised to 2 by 3. So finally we get the point x1 comma y1. Okay. So now we find, therefore the point B k raised to 2 by 3 comma k raised to 1 by 3. This is your final point. Now we have to find our slope of tangents for curve 1 and slope of tangent for curve 2. So therefore the slope of tangent to curve 1 m1 is equals to dy by dx at x1 comma y1, and the slope of tangent to the curve to m2 is equals to m1 is equals to dy by dx at x1 comma y1 and dy by dx at x1 comma y1. So that implies m1 is equals to, we have dy by dx at, we have the value of 1 upon 2y at k raised to 2 by 3 and k raised to 1 by 3, and here m2 is equals to minus y upon x at k raised to 2 by 3 and k raised to 1 by 3. That implies m1 is equals to, finally we have 1 upon 2 into k raised to 1 by 3. So this is your value of m1, and similarly we have to find m2 is equals to minus k raised to 1 by 3 and k raised to 2 by 3. k raised to 1 by 3 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि m1 इज इक्वल टू हमें जो मिला है k वाला टर्म वो नीचे है इसलिए. So that implies m2 is equals to minus 1 upon k raised to 2 by 3 into k raised to minus 1 by 3. So k raised to 2 by 3 minus 1 by 3. So finally we get 1 by 3. So this is your value of m2. Now m1 dot m2 is equals to 1 upon 2 into k raised to 1 by 3 and minus 1 upon k raised to 1 by 3. So that implies m1 dot m2 is equals to minus 1 upon 2 into k raised to 2 by 3. So that implies minus 1 upon 2 into half. और ये हाफ कहाँ से आया वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. Because we have 8k square is equals to 1. So that implies k square is equals to 1 by 8. So that implies k square whole raised to 1 by 3 is equals to 1 upon 8 raised to 1 by 3. So finally we get k raised to 2 by 3 is equals to half. कैसा है आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि 8 is a cube root of 2. Okay, so finally we get half.
therefore m1 dot m2 is equals to -1. Hence the curves cut at right angles. The curves cut at right angles. ओके, समझ में आ गया? क्या प्रूव करना था? यही ना? सो हमने जहाँ भी हमने ये जो हमने क्वेश्चन में दिया था उसका हमने यूज करके ये फाइंड आउट किया. सो एक बार ये सॉल्यूशन देख. Now the next is remark. The distance from the point x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is d is equals to modulus of ax1 plus by1 plus c डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर आपको पता होगा तो ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस में हमने ऑलरेडी ये सीखा ही है, देखा ही है, बराबर ना? तो इससे तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो ही, बराबर ना? तो इससे मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा और एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इफ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द whatever we have given point to the line, okay, तो हम कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वी अप्लाई दिस फॉर्मूला d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिनोमिनेटर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो एक फॉर्मूला एक बार देख लो. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इसमें ये फॉर्मूला में अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए एक्सरसाइज 6 फिफ्थ सम. Show that the normal at any point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta, y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. ओके, मतलब हमने जो अभी प्रीवियस जो हमने रिमार्क देखा उसमें जो पॉइंट था, ओके, x1, y1, वो क्या है? हमारा ओरिजिन है, बराबर ना? मतलब 0 0 है. और जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन हमारा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला टारगेट हमें क्या है? हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी. और इसको ऑलरेडी हमने कौन सा पॉइंट? एट एनी पॉइंट थीटा, मतलब हमें पॉइंट थीटा दिया है. ओके, सो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं. सो आंसर हियर द इक्वेशंस ऑफ कर्व आर x is equals to a cos theta plus a theta sin theta and y is equals to a sin theta minus a theta cos theta. Differentiating with respect to theta, we get dx by d theta is equals to a constant and the derivative cos theta, which is minus sin theta, so minus a theta cos theta plus a constant. Now we apply the multiplication rule in differentiation. We get theta is a constant, sin derivative of sin which is cos theta and plus sin theta. And similarly here we have dy by d theta is equals to a sin theta derivative of sin, that means cos theta minus a in a bracket theta constant cos minus sin, that means minus theta sin theta and plus cos theta is a constant, derivative of theta with respect to theta gives us 1. So that implies dx by d theta is equals to minus a sin theta, स्मॉल ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा एंड दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा. सो ए साइन थीटा कैंसल, ए कॉस थीटा कैंसल, सो दैट इम्प्लाइज डी एक्स बाई d theta is equals to a theta cos theta and dy by d theta is equals to a theta sin theta. Now dy by dx is equals to dy by d theta and dx by
d theta. That implies a theta sin theta and a theta cos theta. So finally we get dy by dx is equals to a cancel, theta cancel, tan theta. Therefore we know that the slope of tangent, slope of normal at theta m is equals to minus 1 upon dy by dx at theta. That implies m is equals to minus 1 upon tan theta. That implies m is equal to minus cot theta. So we know that the equation of normal y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So we have the value of that implies y minus y1 is equal to, we have a sin theta minus a theta cos theta is equals to minus cot theta into x minus the value of x, which is a cos theta plus a theta sin theta. So that implies y minus a sin theta minus plus a theta cos theta is equals to minus cos theta upon sin theta and into bracket x minus a cos theta minus a theta sin theta. So that implies यहाँ पे sin theta है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा. So और आते ही सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So finally we get that implies y sin theta minus a sin square theta plus a sin theta cos theta is equals to माइनस cos theta को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी गेट माइनस एक्स cos theta minus plus a cos square theta and obviously minus plus a theta sin theta into cos theta. So these term both are cancelled on both the side और ये दोनों टर्म को हम इक्वल के इधर साइड शिफ्ट कर देते हैं. So that implies we get x cos theta plus y sin theta minus a square minus a sin square theta minus a cos square theta is equal to 0. So that implies x cos theta plus y sin theta minus a is equals to 0 because we know that अगर आप माइनस से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका आंसर है 1. ओके, विच इज equation of normal. Comparing with ax plus by plus c is equals to 0, we get a is equals to cos theta, b is equals to sin theta and c is equals to minus a. And of course we know that the normal, the distance from the origin, the distance from origin, that means 0 0 to the normal is d is equals to ax1 plus by1 plus c in the denominator a square plus b square. So that implies d is equals to, in a bracket, value of a which is cos theta into 0 plus sin theta into 0 and plus minus a and whole divide by square root cos square theta plus
sin square theta. This is gives us 1. So finally we get that implies d is equals to minus a divided by square root 1. So finally d is equals to a, which is constants. Hence the normal hence the distance from origin to the normal is constant. क्या प्रूव करना था ये ना, the distance of the normal from origin, the distance of normal, the distance of normal from origin, the distance of normal from origin is a constant. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके, सिंपल है ना. एक बार ये फिर से एक बार रिवाइज कर लो और देख लो. आई थिंक कुछ समझाने जैसा फिर से नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है और x माइनस x1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, और जो m इज इक्वल टू हमें माइनस कॉट थीटा मिला है. फिर तो जो भी स्टेप्स है वो मैथमेटिकल स्टेप्स से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, एक बार शांति से ये सॉल्यूशन देख लो. ओके, एक्सरसाइज 6 21st सम विच इज द MCQ, जो हमारा MCQ है. बराबर ना. क्वेश्चन क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1 2 3 एंड हाफ. मतलब हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी है. फर्स्ट क्या है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और दूसरा कर्व का इक्वेशन दिया है. बराबर ना. तो मतलब m के प्लेस में क्या आंसर आता है वो हमें फाइंड आउट करना है. बराबर. अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा m क्या है, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. मतलब इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मींस m इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1, y1 हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो सबसे पहले उसको हम सपोज कर लेते हैं. सो आंसर लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व. ओके, चलो ये तो हमने सपोज कर लिया. हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व बी y square is equals to 4x. Differentiating with respect to x, we get 2y dy by dx is equals to 4. So that implies dy by dx is equals to 2 upon y. चलो dy by dx तो हमारा फाइंड आउट हो गया. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना हमारा, नाउ फॉर द पॉइंट x1, y1. Okay, for that we know that here the point x1 y1 is on the curve, so it must satisfy the equation of curve.
इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूँ. सो 1 implies we get y1 square is equals to 4x1 and I will give it result number 2. चलो अभी हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, बराबर ना. ओके, सो ऑब्वियसली जो पॉइंट हमने सपोज किया है, बराबर, वो कव का पॉइंट है ना, बराबर. तो ऑब्वियसली जो कव का पॉइंट है और कव जो पॉइंट है, बराबर ना. ओके, तो वहां से नॉर्मल हमारा पास हो रहा है, बराबर ना, टच होके पास हो रहा है. तो जो पॉइंट है वो कव का इक्वेशन, जो नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन उसका भी सेटिस्फाई करेगा. ऑल्सो at point the equation of tangent y is equals to mx plus 1 at point x1 comma y1 is y1 is equals to mx1 plus 1. Give it result number 3. Okay, now we know that the slope of tangent m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equal to dy by dx at x1 comma y1. That means 2 upon y1. So हमारा टारगेट क्या है, हमें y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर ना. ओके, इसको मैं कैपिटल ए दे देता हूँ. रिजल्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, y1. मतलब हमें, मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमें x1 y1 फाइंड आउट करना है, मतलब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. तो उसमें से x की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है, स्लोप का आंसर है m इक्वल टू 2 अपन y1 है, मतलब इसमें कोई x के रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, बराबर. तो सिंपली हमें y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है y1 वो हमें सिर्फ यहाँ पुट करनी है. सो फॉर दैट चलो अभी हम क्या करेंगे, जो m की वैल्यू आई वो 3 में पुट कर देते हैं. सो दैट 3 implies we have y1 is equals to in a bracket 2 upon y1 into x1 plus 1. So that implies y1 square is equals to 2x1 plus y1. y1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं. So y1 square minus y1 is equals to 2x1 और इसको हम रिजल्ट नंबर क्या दे देते हैं, स्टार दे देते हैं क्योंकि इसकी हम जरूरत पड़ेगी इसलिए. गिव इट रिजल्ट नंबर स्टार. चलो आगे हम देखते हैं. अभी हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं. y अभी आपको पता चल जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x1. सो दैट इम्प्लाइज y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2x1. सो दैट इम्प्लाइज y1 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 2x1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, क्या है, y1 square minus y1 from result number star. So that implies y1 square is equal to 2y1 square minus 2y1. ये उधर शिफ्ट कर दे, 2y1 square minus y1 square we get y1 square minus 2y1 is equal to 0. So that implies y1 is a common, y1 minus 2 is equal to 0. Therefore we have y1 is equal to 0 or y1 is equals to 2. So first, when y1 is equal to 0, we have capital A implies m is equals to 2 upon 0, which is not possible. When y1 is equals to 2, A implies m is equals to 2 by 2. So finally we get m is equals to 1. So finally your answer is ऑप्शन नंबर कैपिटल ए. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, क्योंकि हमें एक कव का इक्वेशन दिया था और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ था और हमें टारगेट क्या है, एम, मतलब हमें स्लोप फाइंड आउट करना. स्लोप दैट मींस dy by dx at x1 y1. ओके, सो dy by dx at x1 y1 हमें क्या मिला, m is equal to 2 by y1. इसका मतलब हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना था उसमें सिर्फ हमें y कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना था, x की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कर्व का यूज करके dy by dx फाइंड किया और जो पॉइंट है वो कर्व का पॉइंट है, उसका इक्वेशन का सेटिस्फाई करेगा. एंड सिमिलरली जो पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी सेटिस्फाई करेगा.
जो दोनों में हमने x के रिप्लेस में x1, y रिप्लेस y1 कर दिया। फिर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया, m की वैल्यू फाइंड आउट किया और वो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 में पुट कर दिया। तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिला, उसको हमने रिजल्ट स्टार दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। सो 2 इम्प्लाइज हमने क्या किया, 4x1 को 2 इंटू 2x1 लिखा और 2x1 की वैल्यू जो है वहाँ पे पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y1 की दो वैल्यू मिली, 0 और 2। हमने कौन सी यूज की? 2 यूज की, क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है इसलिए। सो फाइनली वी गेट m इज इक्वल टू 1। ओके, the last sum depending on tangent and normals, which is exercise 6 24th sum, which is your MCQ. Okay, so ये MCQ the points on the curve 9y square is equal to x cube, where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis are, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, बराबर। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं। सो आंसर में लेट x1, y1 बी पॉइंट ऑन curve. Okay, here the equation of curve be 9y square is equals to x cube. Differentiating with respect to x, we get 18y dy by dx is equals to 3x square. So that implies dy by dx is equals to 3 6, that means x square upon 6 5. Okay, okay, now we know that the slope of normal m is equals to -1 upon dy by dx at x1, y1. So that implies m is equals to -1 upon dy by dx at x1, y1. That means x1 square divided by 6y1. So that implies m is equals to -6y1 upon x1 square. So this is the value of small m and give result number capital, क्योंकि हमें इसको टारगेट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो पॉइंट है here, the point x1, y1 is on the curve. Okay, so it must satisfy the given equation of curve. So we know that 1 implies, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं। So 1 implies 9y1 square is equals to x1 cube. चलो ये तो यहाँ पे इतना हो गया। ओके, अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? The points on the curve where the normal to the curve makes equal intercept with the axis, बराबर ना? मतलब हमें क्या है, एक इंटरसेप्ट वाली फॉर्मूला दी है। Therefore we know that इसको हम रिजल्ट नंबर क्या देते हैं? 2 दे देते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट the equation of normal to the curve makes equal intercept is x by a plus y by b is equals to 1. Okay, so that implies x by a plus y by a is equals to 1 because equal intercepts. So therefore a is equals to b. So that implies x plus y is equals to a. So that implies y is equal to minus x plus a. Compare with y is equals to mx plus c, we get m is equals to
-1. Put m is equal to -1 in equation number capital A. So A implies -1 is equals to -6y1 upon x1 square. So that implies x1 square is equals to 6y1. Get result number 3. Okay, from 2 and 3. 2 and 3 we get 3 implies y1 is equals to x1 square by 6. Put y1 is equals to x1 square by 6 in result number 2. So 2 implies 9 y1 square is equals to 9 into x1 square by 6 whole square is equals to x1 cube. So that implies 9 x1 raised to 4 36 divided by x1 cube. So that implies 9 4s are and यहाँ पे 1 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे. So we get x1 is equals to 4. Put x1 is equal to 4 in result number 2. So 2 implies 9y1 square is equals to 4 cube. So that implies 9y1 square is equals to 64. So that implies y1 square is equals to 64 by 9. y1 is equals to plus or minus 8 by 3. So answer, okay. Hence the point B 4 comma plus or minus 8 by 3. So answer is option number A. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कैसे फाइंड आउट किया तो आपको पता ही है कि हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है और एक क्या दिया है कि नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट. बराबर. तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो कर्व के साथ क्या कर रहा है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट. मतलब जो इंटरसेप्ट है वो क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट वो आपको कर रहा है. बराबर. ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है और आपको पता ही है ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट. बराबर ना. ओके. इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट वो हमने ऑलरेडी इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन में हमने ऑलरेडी सीखा ही है कि द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट. ओके. द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट is x upon a plus y upon b is equals to 1. Okay. Or the equation of intercept related to the equation ax plus by plus c is equal to 0 is x upon a plus y upon b is equals to 1. So इक्वेशन का इक्वेशन का यूज करके हमने डी बाई डी एक्स फाइंड किया. उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया. देन द गिवन पॉइंट इज अ कर्व पॉइंट. सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट किया. उसके बाद हमने क्या किया, तो जो हमने क्वेश्चन में दिया है द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई की. वो इक्वेशन हम use that equation we have to find y is equal to minus x plus 1 compare with y is equal to mx plus c, we get m is equal to minus 1. तो ये जो इक्वेशन है ना जो हम जानते हैं उसका हमने यूज करके हमने m is equal to minus 1 फाइंड आउट किया. उसकी वैल्यू हमने 2 में a में रिप्लेस कर ली. तो हमने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट किया. फिर हमने 2 और 3 को क्या किया, एक मिक्सचर में डाल दिया. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का डाल दिया. बराबर मिक्स करके हमने x1 is equal to 4 बाहर निकाला और y1 is equal to plus or minus 8 by 3 बाहर निकाला. So finally we get the point B 4 comma plus or minus 8 by 3. So this is your final answer and which is your option number capital A. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हमने फाइंड आउट किया था. बराबर. यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये जितना पोर्शन हमने किया ना, कहाँ से, वी नो दैट से लेके जो हमने किया ना वो पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसी से हमने यहाँ फाइंड आउट किया. ओके. जो भी है उसके रिप्लेसमेंट में ए किया क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है इसलिए. ओके. सो ये एक बार सॉल्यूशन देख लो. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा जो टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके. तो इसी तरह हमने हमारा जो चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसके 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए. फर्स्ट वाला था रेट ऑफ चेंज वाला, सेकंड था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड थर्ड था टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एरर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके.
जो दो दो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, 25 से 30 सम्स जितने हैं, बराबर, एक तो मैं कराऊंगा और बाकी 5-6 आपको होमवर्क में दे दूंगा। बहुत ईजी सम है, ओके, एंड ईजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, बराबर, तब तक ये सब आप कंप्लीट कर देना, ओके। अभी क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हमारे हम मैक्सिमम 2 ही लेक्चर लेंगे, बराबर ना, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो ही जाएगी। 25 से 30 सम है इसलिए, बराबर ना, जिसमें से एक से एक रिलेटेड सम है, बहुत ईजी है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपका 4 मार्क्स का सम जो है वो कंपलसरी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% आता ही है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हम पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर्स में हमारा मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।